Good morning, friends. This video to highlight important changes in GST expected from Union Budget 23-24 going to be presented by Honorable Finance Minister on 1st of February 23. This is in the light of recommendation made by GST Council in the 48th GST Council meeting. There are 9 important changes which I'm expecting, which will come in the Finance Bill 23 pertaining to GST. First one, the minimum threshold for launching prosecution under section 132 subsection 1 is going to be increased from 1 crore to 2 crore rupees, except issuance of invoice without supply of goods or services. Section 132 subsection 1 में 12 offences हैं, 12 offences. And now this minimum threshold for launching prosecution is now going to be increased from 1 crore to 2 crore, except issuance of invoice without supply of goods or services, which is called fake invoice. The first change. Second change, there are certain offences under section 132 subsection 1, 12 offences, and 3 out of 12 are going to be decriminalized. 132 subsection 1 clause G, J and K. It is first, when you are obstructing any officer for performing his duties, his GST duties. Second, you are deliberately tampering evidences. Third, you fail to supply information as required by GST department. So these 3 offences out of 12 offences going to be decriminalized. Third, compounding of offences in GST. Presently, compounding can be taken by any taxpayer either before or after institution of prosecution provision. And presently, compounding can happen within the range of 50% to 150% of tax amount, which is now going to be reduced to 25% to 100%. Third one, fourth. Now you will get facilitation for intra-state supply of goods by unregistered supplier or composition dealer through e-commerce operator. हमने देखा है जब हम ई-कॉमर्स साइट अमेजोन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, और उनके थ्रू अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहते हैं और आप अनरजिस्टर्ड है, दिस फैसिलिटी गोइंग टू बी गिवन. आप थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर यू कैन मेक इंट्रा-स्टेट यानी विद इन स्टेट, इंटर-स्टेट आप नहीं कर पाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और कॉम्पोजिशन डीलर जिन्हें कॉम्पोजिशन डीलर का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, दे कैन ऑल्सो मेक इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. But this is going to be applicable from 1st October 2023. Next change. No GST. GST should not be charged on 3 transactions. Third country sell, high sea sell and inbound sell. Para 7 and Para 8 got introduced in Schedule 3
and Schedule 3 is neither a supply of goods nor supply of services. What is third country cell? आप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, बट व्हेन यू आर सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, से कोरिया, आपने कोरिया से यूएस सप्लाई किया, आपका कस्टमर यूएस में है, सो आपने कोरिया से परचेज किया और यूएस में सप्लाई किया, बट आप इंडिया में रजिस्टर्ड है, जीएसटी नहीं लगेगा. हाई सी सेल, जीएसटी नहीं लगेगा. इनबाउंड सेल, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपका माल रखा हुआ है और बिफोर इट इज क्लियर्ड फॉर द होम कंजम्पशन, आपने कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर ही सेल किया, जीएसटी नहीं लगेगा. बिकॉज पैरा 7 एंड पैरा 8 इंट्रोड्यूस्ड इन शेड्यूल 3 फ्रॉम 1st February 2019. It is neither a supply of goods nor supply of services. But dispute इस बात का हो गया, prior to 1st February 2019 जीएसटी डिपार्टमेंट ने सो कॉज नोटिस इशू करना चालू कर दिया, लिटिगेशन चालू हो गया और वो कहते हैं प्रायर टू 1st February 2019 जीएसटी लगेगा. अब शेड्यूल 3 पैरा 7 एंड पैरा 8 जो अमेंडमेंट हुआ, दैट विल बी मेड रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल फ्रॉम 1st July 2017. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो 1st July 2017 से लेके 31st January 2019 तक जिसका डिस्प्यूट चल रहा है, सो कॉज नोटिस इशू कर दिए गए हैं या ऑर्डर अगेंस्ट में पास हो गया है, डिपार्टमेंट आपसे इस पे जीएसटी मांग रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिट्रोस्पेक्टिवली नाउ एप्लीकेबल, नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अगर आपने जीएसटी पे कर दिया है तो जीएसटी काउंसिल ने यह कहा आपको रिफंड नहीं मिलेगा. बट इन माय हम्बल सबमिशन, क्या आप इस पे जीएसटी ले सकते हैं? थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, हाई सी सेल, इनबाउंड सेल ले सकते हैं क्या? नहीं लगता जीएसटी. आप रिट्रोस्पेक्टिवली अब इसको अमेंड करेंगे फ्रॉम 1st July 2017, बिल अप्रिसिएटेड, बट आप जीएसटी नहीं ले सकते. अगर गलती से मैंने जीएसटी अगर पे कर दिया है और आप कहते हैं कि रिफंड नहीं मिलेगा, इट इज विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये रिफंड मुझे मिलना चाहिए. Only thing, I should not have passed on incident to any other party. So this is the next change. Coming to the next, which is the important one. Streamlining of GST return system and statement. And they're going to be changed under section 37 GSTR 1, 39 GSTR 3B, 44 GSTR 9 and 9C, and section 52 tax collected as so GSTR 8. Time limit going to be fixed 3 साल. अगर आपने ये 1, 3B, 9, 9C and GSTR 8, आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट अब मिलेगी within 3 years from the due date for furnishing such statement or return. यानी 3 साल की अब कैपिंग कर दी गई. अगर आप डिले करते हैं, फाइल नहीं करते, तो वो लिमिट अब हो जाएगी 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग सच रिटर्न. कमिंग टू द 7th item, and which is again interesting one. जीएसटी क्रेडिट डिस्प्यूट होती थी under section 12 subsection 8 of IGST Act. ये था क्या, पहले मैं आपको समझाता हूं. You know, ocean freight and air freight, sunset clause is being removed from 30th September 2022. 1st October 2022 से जीएसटी लग गया. ओशियन फ्रेट 5%, एयर फ्रेट 18%. बट प्रॉब्लम क्या थी
कि मान लीजिए मैं फ्रेट फॉरवर्डर हूं दिल्ली में, दिल्ली रजिस्टर्ड, एंड आई एम गिविंग सर्विसेज टू माय क्लाइंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली. सो अगर हम इस ट्रांजेक्शन को देखें तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, पहले तो ये इंट्रा स्टेट होना चाहिए, सीजीएसटी एंड दिल्ली एसजीएसटी, बिकॉज in case of B2B supply, place of supply would be location of recipient. But उसमें एक proviso था, and proviso used to say that place of supply would be ultimately destination of goods. So destination normally is outside India. So when we are undertaking transportation of goods to a place outside India, POS is a destination outside India. So IGST लगेगा इवन दो ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हो रही है, IGST लगेगा, ये तो ठीक था. पर अब क्वेश्चन ये था, रिसिपिएंट जो दिल्ली रजिस्टर्ड है, क्या वो IGST की क्रेडिट ले पाएगा? दिस वाज द डिस्प्यूटेड पॉइंट. 48 GST काउंसिल मीटिंग ने डिस्कस किया और एक सर्कुलर नंबर 184 गॉट इशूड. उन्होंने कहा कि आप IGST ही चार्ज करेंगे और आप उस इनवॉइस पे स्टेट कोड 96 डालेंगे, 96, फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन कंट्री. पहले तो हम जब ई इनवॉइस जनरेट कर रहे थे तो वो ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे ऐसी इनवॉइस जनरेट नहीं हो रही थी. नाउ ई इनवॉइसिंग पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है. यू कैन generate your export invoice pertaining to this transaction mentioning state code 96. आप IGST ही चार्ज करेंगे और सर्कुलर ने कहा है रिसिपिएंट को IGST की क्रेडिट मिलेगी बिकॉज इट इज टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. So next item, which is again important, there would be amendment in the definition of non-taxable online recipient. Non-taxable online recipient यानी जो हम ऑनलाइन कई मूवीज, कई चीजें हम डाउनलोड करते हैं, हम रजिस्टर्ड नहीं हैं, वी आर कंज्यूमर ओनली. सो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस, OIDAR. इन दोनों की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 and under section 2 subsection 17 of IGST Act going to be amended to include online coaching and training, so that कई dispute होता था कि जो ऑनलाइन कोचिंग हम लेते हैं, सप्लायर इंडिया से बाहर है और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं GST में, कंज्यूमर. What would be the implication on GST? Lot of litigation, right? So they are going to include this online training and coaching within the definition, and there would be amendment to done away all the litigation. So these are the important changes which I am expecting in the Finance Bill 2023. एक चीज और मुझे लगता है, एक amnesty scheme announced हो सकती है, maybe, for प्रोसीजरल नॉन कॉम्प्लायंसेस. अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और लेट फीस लेवीड हो रही है आपके ऊपर, तो देयर मे बी एमनेस्टी स्कीम फॉर सच नॉन कॉम्प्लायंसेस. लाइक रजिस्ट्रेशन आपने विद इन टाइम नहीं लिया, या आपने रिवोकेशन अपनी डालनी थी फॉर कैंसिल रजिस्ट्रेशन, आपने टाइमली नहीं डाली, या GST स्टेटमेंट GSTR 1 and return 3B आपने टाइमली नहीं भरा. सो मे बी वन विंडो आपको दी जाएगी. ये इस साल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, फुल बजट 23, बिकॉज जनरल इलेक्शन इन 24. सो लुक्स लाइक एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हो सकती है. तो मैंने ये जितने 9 पॉइंटर्स थे
जो मुझे लगते हैं इस बार जीएसटी में चेंजेज होंगे और फाइनेंस बिल 23 का पार्ट होंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली एक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। कल बजट आएगा तो बजट के ऊपर भी मैं एनालिसिस करूंगा क्लॉज बाय क्लॉज, एंड दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू। मेरा वीडियो आपको 2 फरवरी सुबह 12 बजे के आसपास मैं आपको अपलोड करूंगा। स्टे ट्यून, कीप लविंग and passing on your blessing to me at all time. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.